Okay, good morning, all. Let's start with the lecture. Yesterday, we were talking about um, certain applications we were doing on NetBeans, and we'll practice some more today. Yesterday, we shared about how um, radio buttons can be utilized and used, right? So, let's just move on to the book. So this was the sample GUI given. So for every day, one radio button has to be added, and when you select any one of it, and click on this button weekday finder, so that particular day is displayed. Now for doing this, we have to use multiple if conditions, right? So the program will be like this. So if first radio button is selected, then will print Monday. Else, if second radio button is selected, then we'll print Tuesday. Likewise, we have to put multiple if conditions for all different radio buttons, and then based on that, we have to print the things in the text fields, right? And we have done this in the program also. So this was the program that we have made. Let's just see. So this was the output. Select day one, click on day finder, will print that particular day. Day three, remove this day one and then Wednesday. Day six, Saturday. And day seven, Sunday. Now, one problem was that we can select multiple radio buttons also. Now, in this case, it will only select the first one. So, this should not happen because in radio buttons we can select only one. So for this, that we have to add up radio button group into this GUI form, right? So how do we do that? So just take one group, control from the palette, drop it on the frame anywhere. Now the moment you drop it, you'll find this radio button group one is added. Now it is not shown, but it is there in that particular form. Now what you need to do is click on the very first radio button, go to the button group property. From here, you select the name of the button group that we have added. The name was button group 1, right? Select this. Go to the second one, button group property, select this. Likewise, select it in all the radio buttons. So this will link up all the radio buttons into one group, right? You can see these yellow lines. These yellow lines are showing that all these radio buttons, they are linked up, right? Now if you run the file and see the output, you can either, you cannot select multiple radio buttons, you can only select one, right? If you try to select the next one, the previous one will, the selection will be removed, right? So you will get the desired result without any problem. Fine. Moving further, Joban, switch on your camera. Joban, I'm talking. Kindly switch on your camera. Okay, stay there. Next, we have
So this is selected method was used to read these radio buttons. This we have already done. Now, see the same question. Since if you see in this question, we have to write multiple if conditions. One, two, three, four, five, six, 7 times we have to add up if, right? Now, similarly, if we want to create a software where we need to print the name of the months, so for that we need to have to put 12 different if conditions for different months. Okay. So in case we have such kind of things where we compare the things in multiple times, we can use another kind of statement called as switch statement, right? So what we do over here is we'll write switch. In the bracket we'll write one expression or a variable, and if the value of this variable or expression is then we'll match the value and of this expression and variable with the case values. तो अगर इस वेरिएबल की वैल्यू ये वाली हुई वैल्यू 1, then it will run statement number 1, and if it is value 2, then it will run statement number 2. This break will discontinue this condition afterwards. तो ये क्या करेगा, इस वेरिएबल को या एक्सप्रेशन की वैल्यू को मैच करेगा केस की वैल्यूज के साथ। जहां वैल्यू मैच हो गई वो वाली स्टेटमेंट्स रन होंगी, and likewise you can keep on adding different cases, so it is easier for us to express the things or to write the things while using switch statement. We don't have to write compare the variables or expression with the values in if conditions each and every time। ठीक है, तो जो हमने अभी if statement किया तो उसको हम switch mode में भी लिख सकते हैं, right? So first of all let me change the same program। अगर हम इसी में changes करें, so what all we need to write here is, I'll just type here first, then we'll do that practical part also. So what we are going to compare, whether we are checking whether the radio button 1 is selected or not, right? So what we will do here is we'll take a variable boolean x is equal to j uh, j radio button 1 dot is selected. Right now what will happen with the help of this, we can make out, so whatever is, if this radio button is selected then x will have true, otherwise it will have false, right? So in place of if we can also put a switch statement. We can write switch x, put a bracket, case true, in place of equal to we put colon here, then j text field 1 dot set x, this print statement, Monday semicolon. Similarly for case 2, sorry sorry, then we'll write break, and similarly we can put multiple case statement like this, right?
or what we can do is we can put a number in place of this, and we can put case 1 2 3 4 like that in that particular number, right? So the things will be more clear if we see the questions given here. Let's see, understand with this question. Now here we are given with uh, this interface where we have done this platinum, gold and silver earlier. हमने यहाँ पे रेडियो बटन्स लगाए थे, platinum, gold, silver वाला जो GUI था, तो उसको थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई किया है. So one amount is to be entered here. Then we have to select either platinum or gold or silver from this particular combo box. And when we click on this button, calculate. So whatever is the selection done here, उसके बेस पे डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट होगा और अमाउंट में से माइनस हो जाएगा. Like if silver is selected, then discount 10% of discount has to be given. If gold is selected, 20% discount is to be given, and platinum is selected, so 30% discount is to be given, right? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इस कॉम्बो बॉक्स की जो भी सिलेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली हमने डिस्काउंट देना है, ने कैलकुलेट करना है और अमाउंट में से माइनस करना है, राइट? नाउ टू डू दिस we'll take a variable final amount, double type, because it can be in decimals also, right? And initialize this as 0. Then we need to read the amount. For that we need a variable bill amount. So double bill amount is equal to double dot parse double text field 1 dot get text. So whatever is written here in this text field, that will be saved into this variable bill amount, right? फिर स्विच में हमने लिखा है combo box 1 dot get selected index. अब हमने ये किया था कि get selected index क्या है. get selected index एक मेथड है जो कॉम्बो बॉक्स के इंडेक्स नंबर को रीड करता है. अगर तो कॉम्बो बॉक्स में जो सबसे वैल्यू रीड की है, सबसे पहली वैल्यू सेलेक्ट की गई है, देन इंडेक्स नंबर फॉर दैट फर्स्ट वैल्यू विल बी 0. And if second is selected, then index number will be 1. If third is selected, then index number will be 2, likewise, right? So this will give you either 0 or 1 or 2. Now what we need to do is we just want to put same cases, case 0, case 1, case 2, right? So case 0 मतलब आपका फाइनल अमाउंट जो है वो बिल अमाउंट ही है, नो डिस्काउंट, right? And case 1 means 0.9 multiply bill amount. 0.9 is 10% less than, or you can write in this way, bill amount minus bill amount star 10 over 100, right? Or 10% निकालना है, 1 minus 10% is always 90%. So 90 over 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे भी लिख सकते हैं बिल अमाउंट माइनस बिल अमाउंट स्टार 10/100. So this will give you the 10% discount, right? And this is done for silver. Then if case 2 is selected, then 20% discount is to be given. So वहाँ पे 100 minus 20 is 80. 80 over 100 multiply bill amount will calculate. Or as I told, we can write bill amount minus bill amount star 20 over 100. And similarly here 30% discount is to be given. Case 3. So केस 0 में कोई इंटरेस्ट डिस्काउंट नहीं मिलेगा. केस 1 में, केस 2 में और केस 3 में 3 डिफरेंट वेरिएबल्स वैल्यूज यू हैव टू पुट, राइट? 4 वैल्यूज इंस्टेड. तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट देयर इज नथिंग सेलेक्टेड, एंड इफ platinum, gold and silver is selected, then based on that thing discount is to be calculated. Then finally, and one more thing, in switch statement we also put default statement. स्विच में केस 0, केस 1, केस 2 तो चलो हमने डाल दिए कि इसका वैल्यू अगर 0 है तो केस 1 की स्टेटमेंट रन हुई और हमने ब्रेक कर दिया. ब्रेक मीन्स विल एंड एवरीथिंग हेयर. एंड इफ द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज 1, मतलब कहने का है कि इंडेक्स नंबर 1 है तो
ये कैलकुलेट हुआ और हमने ब्रेक कर दिया, right? If answer for this is 2, that means index number is 2. So we are matching these values with the value of this particular expression. And in case the value of this particular thing is other than 0, 1, 2 and 3, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, या कोई और नंबर है, तब हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट रन करते हैं. तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में जो भी आपकी बिल अमाउंट है, दैट विल बी द फाइनल अमाउंट, राइट? मतलब वही है, नो डिस्काउंट इज टू बी गिवन. फाइन. So then finally the final amount, we will print that final amount in the text field too. Fine. So this is how the switch statement works. So whatever is the expression or variable written here will match the value of that particular expression with the case values. So अगर जिस भी केस में, और इसमें ये होता है कि ये जहाँ पे भी मैच हुआ, मान लो हमने वहाँ पे थर्ड वाला वैल्यू सेलेक्ट किया तो इंडेक्स नंबर 2 सेलेक्ट हुआ, तो केस 0 भी नहीं रन होगा, 2 भी नहीं रन होगा, 1 भी नहीं रन होगा, केस 2 वाली स्टेटमेंट रन होगी. दिस लाइन विल रन एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक विल नॉट रन फर्दर एंड दिस लूप विल स्विच ऑफ एंड देन विल सिंपली प्रिंट द लाइन. तो हम ये ब्लॉक को बंद कर देंगे ये लाइन प्रिंट करने के बाद. फाइन. सो this is how we can do it. Let's practice this in one of the forms. Let us create a new form for this. So we are using combo box here, so I'll give the name combo only. Names are arbitrary, you can give any name, whatever you want to. Right? Now in the GUI, we should have one label here. First of all, in front of the label, we need a text field where the user will enter values. Then again, a label is required, and we need a combo box here. And then two buttons are required. One is for calculate and one is for exit, close button. And a label, two labels. This is the indicator, and here we'll have the final result, right? So this will be your bill amount. This text field should be and empty, and this is your type, customer type. And in this combo box we have to go to properties, and in this model property we have to write the names, right? I'll just click on this button. First item will be your platinum. Let's take it first item as platinum. Second item is gold. Third item is silver, and fourth one is new user. So these are the four items we have to: new customer or new user. So for a new user, no discount is to be. So that means now platinum is the first value. So we'll change that program which is written in the book. यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 पे प्लेटिनम है, 1 पे गोल्ड है, 2 पे सिल्वर है और 3 पे न्यू यूजर है, राइट? दिस इज calculate button, and this is your close button. Close or exit, whatever you want to write. And in the end, we have to write final amount. This label is
the one which is to be black. Right, so this is the label. Fine, now let's do that coding part. Click on calculate button. First, we need to read the amount from this text field. The name of the text field is j text field 1, right? You may change it. So let it be j text field 1 in this case. So we'll write double x is equal to double dot parse double j text field 1 dot get text. Fine, so this will read the value from that particular text field and will enter the value into x variable, right? And then we need to have, let's start with switch, and in the switch we are going to check the, what was the name of this combo box? J combo box 1. I'll make it CB1, smaller name. So we'll write CB1 dot get selected index, put a bracket. Now the first case is case 0, colon केस 0 मतलब इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 0 पे था प्लेटिनम, तो हमने कैलकुलेट करना है प्लेटिनम के का डिस्काउंट. सो we'll take a variable. Variables, as we know that variables, all sort of variables should be declared in the beginning. So I'll take double AMT. AMT is equal to whatever is x plus, and for platinum we have platinum, the discount was 30%. So x minus x multiply 30 over 100, right? So they have used 30 over 100 in place of 30 over 100. You can also write 0.30. So if you divide 30 by 100, you'll get 0.30. So decimal numbers can also be used because we have used double here, right? And we'll put this in bracket because we have to solve this, and then the answer is to be subtracted from x. And we'll put break statement here because ये calculation होने के बाद हमें यहाँ पे खत्म करना है. केस 1 was the index number 1. index number 1 में हमारा gold है, second value is gold. So for gold the amount discount is 20%. Again break.
And next was the silver. For silver the discount was 10%, and lastly was uh, fourth one was no discount. So in that case we'll simply write amount is equal to x, and finally we'll also write default. Default means if nothing happens then amount is equal to x again, right? And no break is required because this is the last line. फाइन. सो ये क्या कर रहा है, CB1 से इंडेक्स नंबर रीड करेगा. अगर तो पहला वाला सेलेक्टेड है यानी कि प्लेटिनम हमने सेलेक्ट किया, तो प्लेटिनम का इंडेक्स नंबर 0 है, विल गो टू केस 0. और यहाँ पे 30% कैलकुलेट करके हम x का भी सब्ट्रैक्ट दैट, तो डिस्काउंट विल बी कम कैलकुलेटेड. एंड इफ then will break means will move to the end, right? And if the index number of the second item is selected, that is index number 1 is selected, so for that index number 1 जो है वो गोल्ड का है, तो 20% कैलकुलेट किया. और ऐसे ही अगर इंडेक्स नंबर हमने 2 सेलेक्ट किया, 2 मतलब तीसरी आइटम, थर्ड आइटम इज सिल्वर, तो उसके लिए 10% हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया. एंड इफ फोर्थ वन इज सेलेक्टेड, फोर्थ वाला वन था न्यू यूज़र, तो न्यू यूज़र का डिस्काउंट 0 है, तो हमने सीधा ही AMT को x के इक्वल कर दिया. तो वट एवर इज रिटन इन x विल गेट द सेम अमाउंट. एंड वी हैव ऑल्सो एडेड डिफॉल्ट, अगर कोई और इंडेक्स नंबर आता है. वैसे देर इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल देर इज नो यूज ऑफ डिफॉल्ट. रीजन इज दैट वी हैव ऑलरेडी गिवन दिस थर्ड ऑप्शन. ठीक है, या तो ये वाले ऑप्शन आप केस 3 हटा दो और डिफ़ॉल्ट लगा दो, या डिफ़ॉल्ट हटा दो और केस 3 लगा दो, दोनों में से कोई एक चीज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो हम ये डिफ़ॉल्ट अगर हटा भी दे तभी हमारा जो प्रोग्राम है वो इजीली विदाउट एरर रन करेगा, बिकॉज इन कॉम्बो बॉक्सेस जो गिवन है उसी में से सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं आएगा, राइट? So this default can be removed. I have just put 2 slashes before it. 2 स्लैश लगाने से एक कमेंट बन जाता है, ये प्रोग्राम का पार्ट अब नहीं है. ठीक है, ये अब प्रोग्राम में रन नहीं होगी ये स्टेटमेंट. Then when you are end up with everything, then we have to print the amount in the label. Now the label name of the label was JLabel4. I'll put it L1. So whatever amount comes, will print that in L1. So L1 dot set text inverted comma and AMT semicolon. So this will print the amount in the text field. So okay, so it is given an error over here that this AMT variable should be given some default statement, or otherwise we have to initialize it. अगर डिफ़ॉल्ट नहीं देते हैं तो इनिशियलाइज करना होता है, हम डिफ़ॉल्ट दे लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे AMT इज इक्वल टू 0 कर दो इनिशियलाइज, not 0, we'll put it at 3, right? So this will print the value. Now let's see how this program runs. Let's run the file. So that's the output area. Now if the bill amount, let's say, is 2500, and we select new user here and click on calculate, we'll get the same amount, 2500. And if you select platinum, then 30% discount is to be calculated, and that is to be subtracted from 2500, so ये आ गया 1750. And if you select gold, तो 20% डिस्काउंट कैलकुलेट करके 2500 में से माइनस करना है, so we'll get 2000. For silver, 10% discount, तो 22
2250 is the answer for this, right? So this is how switch statement works. So whatever selection is being done here from here, based on the selection, this is index number 0, this is 1, this is 2, this is 3. इंडेक्स नंबर याद रखो, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0. तो पहली आइटम का इंडेक्स नंबर 0 होता है, फिर 1 2 3 लाइक दैट, इट कीप्स ऑन गोइंग. सो हमने केस भी 0 1 2 3 से शुरू करना है, राइट? केस वैल्यू शुड बी केस 0, केस 1, केस 2, केस 3. फाइन. One more variation I wish to show here is, okay, in case we miss any of the break statement, then what happens, right? अब ये देखो यहाँ पे, अगर मैं ये ब्रेक हटा दूं तो क्या होगा? If you remove this break, so what happen is, अगर इंडेक्स नंबर 0 सेलेक्ट होता है, यानी कि प्लैटिनम वाली वैल्यू सेलेक्ट होती है, सो AMT में क्या आंसर आएगा? 30% लेस करके वो कैलकुलेट करेगा. उसके बाद ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है तो मतलब वो एंड में नहीं जाएगा. दिस ब्लॉक will continue. It will not, the control will not come out of the block. So what it actually does is it runs the second case also, preceding case. तो ये वाला AMT भी रन हो जाएगा, राइट? यहाँ पे ब्रेक नहीं है तो नेक्स्ट लाइन भी रन होती है एज पर कंपाइलर इंस्ट्रक्शंस, राइट? तो कंपाइलर ऑलवेज रन दी थिंग्स इन ए सीक्वेंस. So this break will break that sequence. So if the break is missing in one of the case और हमने प्लेटिनम सेलेक्ट किया, तो 30% वो सेलेक्ट डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा. उसके बाद ब्रेक नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट लाइन भी रन करेगा, फिर वो 20% कैलकुलेट करेगा और फिर ब्रेक करेगा. तो मतलब हमारा आंसर गलत आएगा, राइट? इन दिस केस योर आंसर विल बी रॉन्ग, बिकॉज हमें प्लेटिनम के केस में 30% डिस्काउंट लेना है, बट एक्चुअली व्हेन ब्रेक इज मिसिंग, then it will also calculate this 20%, right? Then it will try to break. तो ये ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है, right? So I'll just show you this. If I put break here, or now let's run the file and see what is the difference which is coming. If I put 1000 as the amount, I'll select platinum. It is giving 800 as the final amount. 20% उसने कैलकुलेट किया है, जबकि प्लेटिनम पे 30% होना चाहिए. गोल्ड किया तब भी 800 आ रहा है. तो रीज़न वही है क्योंकि वहाँ से ब्रेक मिसिंग है. तो ब्रेक मिसिंग होने की वजह से वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी रन करेगा. Many of the students are left and I haven't taken the attendance yet. चलो, जो लेफ्ट कर गया वो अटेंडेंस से बाहर. Joban has also left. Chalo, fine. So that's the use of break statement, right? I'll just put this break back. Now it will do that 30% calculation. तो इस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएंगे? दो क्वेश्चंस बनते हैं. पहली चीज है कि इफ और स्विच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इफ एंड स्विच? सिंस इसमें भी कंपैरिजन है, उसमें भी कंपैरिजन है, फिर डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस सबसे बड़ा यहाँ पे ये है कि स्विच केस के अंदर जो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं, वी कैन ओनली कंपेयर द इक्वालिटी ऑफ दिस एक्सप्रेशन विद द आंसर. हम यहाँ पे इक्वालिटी चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर या 1 हो या 0 हो या 2 हो या 3 हो, इक्वल चेक कर सकते हैं. इफ यू वांट टू चेक ग्रेटर देन और लेस देन, दैट वी कैन नॉट डू इन स्विच. Switch is only used for comparing the equality check. It is only used to check the equality conditions, not greater than and less than conditions, right? And moreover, यहाँ पे जो expression डाली जाती है, that expression can result in a number or a character. If you want to use some decimal number, that we cannot use. क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 इंटीजर्स होते हैं. अगर हमने कहीं कोई ऐसी एक्सप्रेशन लिखी जिसका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है, डेसिमल्स में आ रहा है, तो वो हम स्विच में नहीं यूज कर सकते. ये एक इसका डिसएडवांटेज है, राइट? सेकेंडली, विल ऑल्सो गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द आउटपुट, लाइक यू आर गिवन विद द स्विच स्टेटमेंट, यहाँ से बीच में से ब्रेक निकाल दिया
फिर वो आपको आंसर पूछेंगे, भी फाइंड आउट द आंसर इफ केस 0 is selected. Then you have to find out 20%, not 30%, because that break was missing. तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, right? So that's it from my side. I'll end up now. Just go through all the things again and practice, and then only you'll come to know the things in better way, right? Okay, goodbye from